Welcome to the episode one of episode पहले भी हो चुका है. This is episode one Yes. of and यहाँ पे it's a continuation of what we talked in the last episode जहाँ पे हमने बात की थी कि how should you begin your college, क्या क्या path होता है, उसी का screenshot actually सब देख सकते हैं. Framework to shape your college life. ठीक है. Now we ended that podcast with a note on फ्रीलांसर्स को कैसे स्केल करना चाहिए थ्रू आवर एक्सपीरियंस में. हम लोग क्या सोचते हैं कि अच्छी अगर Mm. फ्रीलांसर्स एबीसीडी करेंगे तो वो ज़्यादा अपने आप को स्केल कर पाएंगे एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. Basically, the point of today's podcast is and today's live stream is to actually help you develop a framework to get paid more than others doing the same work as you are doing, to actually differentiate yourself, to add a external layer of value over your work that sells you at a higher price than others. So we want to come up with a few points to how to kind of develop a good layer over that skill set and kind of sell it in a good wrapper and get paid for more than what you actually do, because I guess both of us come from this background. We get paid a bit more than others doing the same job. तो मेरे हिसाब से a freelancer is a person who works with multiple people at the same time and is actually not stuck with the foundation of working in one place. So it's like a job, but you don't have a condition of just working in one place, and it's not illegal to work at multiple places at the same time. So that's what a freelancer is. So that's why let's start with this. So how do you become a person who's a nomad who can work in any place possible and make money? what do you think, like how can one become a freelancer? मतलब यार काम करने से पहले तुमको पता भी रहना चाहिए काम Mhm. किधर करने वाले हो. वर्किंग नोमैड, Working nomad. ये तो But पहला पॉइंट है कि भाई जब yeah. भी तुम काम कर रहे हो तुम एक Huh. साथ बहुत सारे काम कर सकते हो. इवन व्हेन आई वाज वर्किंग एज एन एडिटर, आई वाज वर्किंग एज अ फाउंडर Mm, एज वेल, बिल्डिंग माय ओन प्रोडक्ट. मैं दूसरों के लिए एडिट भी कर रहा था, mm, खुद के प्रोडक्ट पे काम भी कर रहा था yeah. और क्लाइंट्स के प्रोडक्ट हैंडल कर रहा था. Mm, तो ये एक चीज़ हो गई. बट yeah. ऑन टॉप ऑफ दिस सेकंड इज जो गलती शायद मैंने की, बट बट मेरे को थोड़ा लेट Mm, रियलाइज हुआ इज व्हेन यू स्टार्ट फ्रीलांसिंग you have to make sure your first client or maybe your second client yes. is someone who Mm, gives you a lot of value. ठीक है, not in terms of money but in terms of connections. मतलब सपोज मैं किसी mm, बिलियनर के साथ बैठ के फ्रीलांसिंग करूंगा तो पॉसिबल है कि मेरे को जो अगला गिग मिलेगा दैट वुड बी 100 times better. yes. ठीक है. Huh. There are two things to your first client network हम्म, and a very good name over there. So when he introduces you to that network, there's a layer of trust already established. तो तुम्हें proof of work देने की जगह proof of trust हो गया. इट्स लाइक तुम्हें हम्म, लोगों को सिर्फ अपना रेज्यूमे नहीं भेजना पड़ रहा. काफी लोग अपना रेज्यूमे एंड अपनी पोर्टफोलियो लोगों को भेजते हैं, बट दैट्स नॉट इनफ. दैट्स जस्ट अ प्रूफ ऑफ वर्क एंड ऑलमोस्ट एवरीवन कैन गिव दैट. But if हम्म, your first client helps you develop a proof of trust with your second client, third client, then that's something, that's more valuable than the money that your first client is giving you. So हम्म, that's one thing. And second thing, your first client, it's cherry on top if your first client is well known in the industry, because now that adds on to your personal brand as well. हम्म, When you showcase your work, you're like, I worked with this guy or I worked with this project, and that project in itself is famous. Like Aryan said, agar if they have worked with a product and that product just blows up, they become popular by itself. So that's yes. there. And so these 2 points, I guess, are really important. Your first client should have the capability to develop a proof of trust हम्म, in the industry for हम्म, your second client, third client, fourth client. So whenever your first client reveals you to their network, a proof of trust should be there. हम्म, That's one thing. And second thing is, तुम्हारा first client should be a well-known figure, at least in that industry, at least in the group of people where he's introducing you, हम्म, or they should be building a product, or they should be building popularity to हम्म. some extent, because that adds on to your popularity as well. And So I guess also these like 2 points on sum it top up, of the right person. yes, on top of that, I would say कि uh, Hmm. finding those people right are pretty hard.
but it becomes easier when you express yourself. I जैसे तुम अगर एडिटर हो तो तुमने इंस्टाग्राम पे डाल दिया अपने एडिट्स एंड तुमने वहां से अपने आप को पॉपुलराइज किया, mm, या तुम एक कंटेंट, जैसे yes, मैं बिल्डर हूँ, मैं टेक प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, तो फॉर मी एक्स एंड लिंक्डइन इज आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गेट स्टार्टेड. तो तुमने अगर कोई भी स्किल एक्वायर yeah, किया, राइट, यू नीड टू शोकेस दैट. जैसे हम लोग भी जब पहला अपना ऐप बना रहे थे विद अ क्लाइंट, ही हाँ, गेव मी अ mm, फीडबैक कि आतिन, तो मैंने स्वॉट एनालिसिस नहीं किया था, एंड आई वाज लाइक कि शिट, हाँ, ये तो सही बोल रहा है. ठीक नहीं है, किया था, yes, नहीं किया था बिकॉज़ आई डिडंट हाँ, नो अबाउट दैट. तो उसका फीडबैक वाज़ वैल्यूएबल mm, फॉर मी, इवन दो उसने पैसा दिया नहीं दिया वो mm, बात की बात है. बट वो मेरे को कुछ सिखा के गया okay, कि ही टोल्ड मी mm, कि हाँ, ये चीज़ें आनी चाहिए तुमको. सो वन्स यू वर्क विद द mhm, राइट पर्सन, राइट, दे विल गाइड यू थ्रू yeah. कि यार तुम ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो. I guess वो really important भी है finding the right person to work with because if I look back at every gig that I have worked with till now and or every intern I have done till now, the most differentiating factor in all my interns are that I still talk to each and everyone who I have worked with and they still keep adding feedback to my हुँ, work and they actually keep a track of what I'm up to and what I'm doing. I also share my work updates with them. So the thing is, they're more or less like mentors to me. I have multiple people who kind of are there to guide me if I do something wrong or I just fucked up something really bad. I can just go reach out to them. Ki, yeah, I fucked this up. How to fix this? हुँ, And they'll be there to help me. And I guess that's what working with right people means, right? Because they're there to not only kind of get work done from you, instead help you increase your skill set, become हुँ, better at what you're doing. करेक्ट. I guess I remember one feedback that stuck with me is that I wasn't good at documenting what I'm doing. So हुँ, effectively, I was doing really less. I was probably kind of doing a good amount of work and हुँ, I was not able to document the entire work, and that's the reason why my value of my work decreased. कि यार इसने बस इतना किया because this much is हुँ, documented. That was a really good feedback for me. फ्रीलांस. It's really important to work with a person who's not only there to kind of get work done from you, also there to improve you, also there to push you to become better. यस, फ्रीलांसिंग में अच्छी चीज़ ये है कि ना, द गाय वुड बी मोर Hmm. लाइक अ फ्रेंड टू यू. इट्स लाइक कि वो बंदा तेरे को ना एज़ अ दोस्त बता रहा होगा. तुम उसको क्लाइंट एड्रेस नहीं कर पाओगे इनिशियली. वो तुमको जब Hmm. बताएगा, ही वुड बी लाइक कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो. बट हम जब एजेंसी में काम करते हैं, Uh-huh. द एंटायर कॉन्सेप्ट इज़ डिफरेंट. तो उससे अगर अच्छा रिलेशन Hmm. बना दिया, ही विल गिव यू मोर फीडबैक. व्हेयरएज़ इन एजेंसी, भाई Yes. वो बंदा ऑलरेडी मेरे Hmm. को एक्सवाईज़ेड अमाउंट पे कर रहा है. ही इज़ एक्सपेक्टिंग दैट आई ऑलरेडी Mhm. नो. ठीक है? फ्रीलांसर को तुम उसका Yeah. 1/4 पे करते हो. I feel before moving on to the next point, this is very important, I guess. When you're looking for your first gig or first paid project, हुँ, try to work directly with founders. It gives you exceptional returns. Trust me. करेक्ट. Try to work directly with the main person in that organization or main person in the project you're working with. Like freelancing में initially when you start, right, there's not a lot of money, Mhm. and it's like Yeah. initially कोई भी चीज़ करना है एक्चुअली में टफ होती है. Gambling on your first client to a very large extent. बट हाँ, वो क्वालिटी डिलीवर करना उसको इज़ वेरी टफ. इवन उससे पहले Yes. यू गेटिंग द फर्स्ट क्लाइंट इज़ वेरी टफ, एंड दैट Hmm. बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन विल हेल्प यू विद दैट. बट लाइक आई वोंट Hmm. से कि अगर कोई बंदा तेरे को एक्सवाईज़ी पैसा दे रहा है, ठीक है, कोई मेरे को 10,000 दे रहा है ये काम करने के लिए, आई जस्ट गो एंड स्टार्ट वर्किंग, Mhm. यू नो, दैट वोंट हेल्प. लाइक Okay. सपोज ये Uh-huh. मेरा बंदा है, Mhm. मैं काम करने जा रहा हूँ, मेरे Mhm. को उससे बात करके मेरे को देखना है Mhm. उससे मेरा relationship अच्छा बैठता है क्या. ठीक है, क्योंकि Mhm. रिमेंबर फ्रीलांसिंग में ना, जितना तुम्हारा रेफरल्स से नेटवर्क बढ़ेगा, उससे ज़्यादा किसी से नहीं बढ़ेगा. Mhm. यू विल Yep. गेट रेफर्ड अ लॉट व्हेन यू डू वेरी गुड वर्क. जैसे मैं एडिटर वाला काम किया, Mhm. ठीक है, मैंने एक छोटे से कंपनी का बनाया, उसने मेरे को रेफर किया टू अ सिंगापुर कंपनी, ठीक है, जिसका नाम Mhm. आज सॉकेट है. सॉकेट सॉकेट को रेफर Okay. किया मेरे को. एक और था यार, जो क्रिप्टो एक्सचेंज करता है, स्वैपिंग प्लेटफॉर्म है, बंजी. अच्छा अच्छा. बंजी Shopping. के साथ Bungee. काम किया. Okay. बंजी का पिंड वीडियो जो है वो मैंने बनाया था.
ठीक है? तो लाइक आई वाज़ ओके। गेटिंग पेड हाँ अ हाँ। लॉट, ठीक है? बिकॉज़ मैंने जो पहला बंदे के साथ काम किया ना, मंदार था उसका नाम, ठीक है? हाँ हाँ। मंदार मंदार तो शायद ही देख रहा होगा, बट एनीवेज़ मंदार था। ओके। मंदार, इफ यू सी माय चैनल यू विल फाइंड अ पॉडकास्ट जिसपे मैंने सत्यम के साथ ब्लॉकचेन की बात की है। तो सत्यम के साथ बात किया एंड ही टोल्ड मी अबाउट एवरीथिंग। आई एडिट दैट वीडियो। सत्यम एक जगह काम करता था, वहाँ पे एक वीडियो भेजा। मैंने वो वीडियो को एडिट किया, मंदार मेरे कनेक्ट में आया, मंदार ने मेरे को 2-3 लोगों के पास रिडायरेक्ट किया। आई वाज़ यूजिंग आफ्टर इफेक्ट्स एट दैट पॉइंट एंड वो लोगों ने इतना अच्छा फीडबैक दिया, इतना ज़्यादा काम करवाया मेरे से। एंड द पे वाज़ आल्सो गुड, जस्ट बिकॉज़ आई वाज़ डूइंग ग्रेट वर्क, मैं इंटरेस्टेड था, ठीक है? And that is यस। how you scale in this business. एक अच्छा connect. I didn't know Mandar was a great connect. ठीक है? I got to know after I was getting that client. तो तुमको भी नहीं पता कौन अच्छा connect है ओके। कौन नहीं. तो like I've heard हाँ this हाँ। line from somewhere. Build bridges, not walls. तो जिसके साथ भी या। connect कर रहे होगे हाँ। उससे काफी अच्छे से यस। बात करो. And व्हाट I वाज योर was जर्नी? my journey of first client, right? तो आई हैड दिस कैटलॉग मेड विथ मी, ठीक है, जहाँ पे मैं अपने सर्विसेज ना ऐसे लिस्ट डाउन कर देता था। आई यूज्ड टू सेल माई सेल्फ, जो कि ओके। अपने पॉडकास्ट का नाम है। हाँ हाँ। तो मैंने हाँ। लिखा कि भाई मेरे से यस। एडिट करना, ये रहा मेरा बजट। मैं अपना बजट पहले ही लिख देता था। हाँ। तो आई गॉट टू नो फ्रॉम समवेयर कि अगर तुम अपना बजट डिफाइन नहीं करो तो सामने वाला कर देगा, ठीक है? सामने हाँ। वाला बता देगा तुम्हारा बजट तुमको। यस। मैंने अपना बजट बहुत सीधा ओके। रखा। मैं 10,000 के नीचे काम नहीं करूँगा, 9,000 के नीचे काम नहीं करूँगा। तो मैंने कैटलॉग बनाया एंड आई स्प्रेड इट। हाँ हाँ। मतलब मैं गया भाई ब्लू लर्न के सर्वर पे। मैं जितने उस टाइम पे लॉकडाउन का पीरियड था, ओके। जितने सर्वर्स थे हाँ हाँ। जो रन कर रहे थे 2020 में, सारे सर्वर्स में आई पोस्टेड दैट कैटलॉग विथ माय ड्राइव लिंक कि मैंने अभी तक बनाया क्या है। तो उस टाइम पे ना वो ब्लैक विडो का मूवी आया था, तो उसका मैंने हाँ। रिक्रिएशन दिखाया था कि भाई ब्लैक विडो का मैं अगर बनाऊंगा तो कैसा बनाऊंगा। मेरे पास अभी भी है वो वीडियोस। तो मैं आफ्टर इफेक्ट्स में जितने एडिट्स किए थे, ओके। राइट, लर्निंग आफ्टर इफेक्ट्स, हाँ put हाँ। them in यस Google यस। Drive का लिंक, add that catalog, हाँ हाँ। send it over। तो हाँ मेरे हाँ। को एक दिन रैंडमली मैसेज ओके। आया था एक बंदे का कि भाई योर एडिट लुक्स गुड, कैन आई गेट एन एडिट डन फॉर 8K। तो मैंने कहा ये तो मेरे बजट के नीचे है, बट लेट मी टॉक, ठीक है? हाँ। तो मैं ऐसे ओके। करके आई गॉट गॉट इट। कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ पीपल जो काम करवाना चाह रहे थे। They just met and they were like यस। talking. मैंने किसी का डील क्रैक नहीं की थी उस टाइम पे। And all of ओके। out of a bloom, somebody invited me on a private server of their own. ठीक है, डिस्कॉर्ड पे हो रहा है, सब कुछ डिस्कॉर्ड पे हो रहा है। अगर मैं आज इसको हाँ रिफ्रेम हाँ। करूंगा तो मेरे को सिर्फ लिंक्डइन पे करना चाहिए था, ठीक है, और एक्स पे ओके। करना चाहिए था। हाँ वो दैट वुड हैव बीन हाँ। बेटर। हाँ। तो वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। हाँ, तो मैं डिस्कॉर्ड पे गया एंड दैट दैट प्राइवेट सर्वर पे अगेन पोस्टेड द सेम थिंग, कैटलॉग भी डाल दिया। बेशर्म हो गया, मैंने कैटलॉग भी डाल दिया सर्वर पे। प्राइवेट सर्वर है तो क्या मैं डाल दूंगा। तो वहां मंदार, सत्यम, वो लोग का पूरा ग्रुप था। इट Did you वाज अ get वेब banned from servers for doing that? ऑफ कोर्स आई डिड, आई गॉट। मैं रेडिट से ही बैन हुआ हूँ Okay. बहुत बार Okay. खुद की प्रमोशन करने पे। Nice. ठीक है, Nice. Nice. वो स्टार्टअप कम्युनिटी जो इंडिया की है रेडिट पे, दे आल्सो बैंड Uh-huh. मी बिकॉज आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ Okay. एडवर्टाइजिंग, ठीक है? Promotion. तो Uh-huh. बट ठीक है, मेरे को चलता है क्योंकि until you ask for it you won't get it, You right? need to ask for help. हाँ, you Huh. need to ask for help or The ask shamelessly. You don't need to like doubt yourself when Mm. you're asking question. Yeah, I have also been super shameless. I came into college, and Hmm. as soon as I came in, I'm like, jitne bhi seniors are working on something of their own, I'll just go shamelessly to them. How can I help you? Any which हाँ, ways. I and did unpaid interns with them. I managed communities with them. Any hmm, sort of work. I brainstorming. I sat for brainstorming. I ऐसे ज्ञान पेलना तो पहले से ही आता है. I know how to talk. I know how to research about topics. I am interested in a lot of things. So I hmm, knew about a lot of industries. तो correct. brainstorming पे बैठ गए Hmm, and shamelessly उनके साथ communities build कर रहा हूँ, unpaid gigs कर रहा हूँ, unpaid काम कर रहा हूँ. तो हाँ, be shameless यार. If you go and ask, you'll hmm. somewhere hit uh, the arrow on the right place in your plate. लुक एट योर सराउंडिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कॉलेज में मैं कम्युनिटी ज्वाइन किया था, बट आई वेरी सून अंडरस्टूड हाँ कि भाई ये लोग जितना मैं सोच के आऊँ उतना काम नहीं करते। सो माय आई कम फ्रॉम अ थर्ड हाँ हाँ. टायर कॉलेज, आई डोंट कम फ्रॉम एन आईआईटी। तो इन आवर कॉलेज लाइक भाई ईसेल वाली कम्युनिटी वो चला रहा है जिसको कोडिंग का कुछ नॉलेज नहीं है। यू नीड टू बी वेरी अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स व्हेन यू वांट टू बिकम अ या. फ्रीलांसर, क्योंकि फ्रीलांसिंग इज नॉट एन इजी जॉब। तुमको अपने आप को इतना हाँ एडवर्टाइज करना पड़ता है, इतना। एंड सपोज यू हैव फ्रेंड्स हु आर टॉकिंग विथ यू, भाई तू ये क्या कर रहा है,
या ये मत कर, ऐसा मत हाँ, कर, वैसा मत कर, यू stay आर इन away अ रॉन्ग from them. सर्कल, यू आर ऑन अ रॉन्ग, Yeah. वेरी रॉन्ग सर्कल. So हाँ. I lost a lot of friends. I over the period of हम्म, time. ठीक है. Over a हाँ. period of time, मतलब rarely people know what I do. Rarely people communicate with me until unless कोई काम हम्म. नहीं आ गया. For clients, you will always have to like एक मैसेज बना लो अपना, कॉपी करो, पेस्ट करते रहो, पेस्ट करते रहो, पेस्ट करते रहो, पेस्ट करते रहो. Look at for that तो one वो guy. Hmm. very cliche but cold DMs still work. Cold DMs and your cold DMs format should be बस कुछ भी रहना चाहिए, अपने आप को सेल करो. ठीक है. Still works. That still works. But Yeah, if you want to like I am this, I do that, I uh, do that, and and this is at this where you point, can see it. see it, and this is my price. This is where you can price भाई खुद देखने दो जहाँ पर see it, and this is where you can see it. Hmm. And last में लिख दो I've gone through your work and हमारी यहाँ synergy बैठती है. Perfect. Gone through your work and we have synergy Perfect. ठीक है. synergy in these places. Hmm. पूरा format दे दिया. Also This guys, is what I use. everyone who is watching right now, 5 लोग देख रहे हैं हमें. तो this is what हाँ. we did in the last stream. कैसे? पहली live stream में we have discussed how you start developing a skill set that you can sell, and second live stream में we are discussing how you get the first client. Yes. अभी we have discussed about how you select the first client. फिर we talked about cold DMs. Let's talk Hmm. about social media. थोड़ी देर. Hmm. तो So social media. LinkedIn and X Hmm. have a very low friction to actually create content because it's Hmm. text, right? Yes. Yes. First point. And second, LinkedIn and X की जो audience है, that's totally different. आपका LinkedIn is mostly about your professional people, the big corporations, and the older side of the spectrum, older side of the working spectrum. I feel X is more of the new generation guys, Hmm. and accordingly you select how much time you need to devote to both the platforms. Like if Hmm. I talk about myself, I'm super active on X because I want to be there with the younger spectrum, with my age wala spectrum, and I Hmm. want to work with them. I want to find synergies with them, and Hmm. that's my take on X and LinkedIn. कि यार, how do you select which platform to be on, and फिर किस type का content डालना होता है? We'll talk about it. But Hmm. Aryan, तू बता Uh, थोड़ा, so I because I think feel you're a LinkedIn guy. I'm a LinkedIn guy, correct? And LinkedIn has Yeah. has has made me go places जिस जिसके थ्रू आई हैव कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ पीपल जिनको मैं डायरेक्टली कभी रीच आउट नहीं कर पाता. जस्ट बिकॉज ऑफ Hmm. माय प्रेजेंस ऑन लिंक्डइन और मे बी एनीवन हु वांट्स टू बिल्ड कंटेंट, राइट? अगर तुम लिंक्डइन क्रैक कर देते हो, यू कुड रीच आउट टू एनीबॉडी ऑन लिंक्डइन. ठीक है. दैट वन फीचर ऑफ Hmm. मैसेजिंग एनी, लाइक आई थिंक फ्री में मेरे को याद नहीं आ रहा कितना था, बट यू कुड मैसेज लाइक 5 to 10 people विद द लाइक जब तुम उनको कनेक्ट करते हो, यू कुड मैसेज देम. ठीक है. एक 250 वर्ड्स का मैसेज और 250 कैरेक्टर्स का मैसेज यू कुड क्राफ्ट. दैट इज सुपर एफिशिएंट फॉर मेकिंग अ कनेक्ट एंड स्टार्टिंग ऑफ कन्वर्सेशन. Basically, अभी तक we talked about तुम्हारा सिमेट्रिकल रीच आउट जो होता है कि यार हम खुद लोगों को ढूंढ रहे हैं और एंड वी आर रीचिंग आउट टू देम either through comments on their posts or connecting to them and sending them a DM or cold DMs, emailing them, and if you got their number, probably WhatsApping them. I've WhatsApped so many people. I just find their number somehow, and there are ways to do that. तो ये हो गया symmetrical part of the reach out. What about the asymmetric part? कि यार we are pushing out our own content, we are pushing out our own story out there, we are showcasing our work, we are kind of tr- trying out to trying to put out more and more content so more and more people see us. उस एस्पेक्ट में थोड़ा बात कर लेते हैं. Let me show a proof of work पहले. I have a screenshot that I'll share 1 minute हाँ, शेयर with करना. regards to that aspect. हाँ. इस aspect से the asymmetric aspect of reaching out to people. So uh, this is the analytics of my Twitter account for the last 1 year, and my followers are 2.9K, impressions 3.9. Let that sink in. 3.9 million people viewed my tweets. Okay. And then 77.8K people viewed my profile. They made the effort to click on my profile, to click on my
profile icon and open it and view it. Hmm. They made that effort. And then 60.3K people made the effort to like my posts. It's a huge number. And this is asymmetric stuff. And the amount of opportunities I got from here is kind of unreal because I got random opportunities from here. A random person approached me, bro. I saw you are working on these things. Let's just talk about it. I got a random connected to random people who I don't know, and I brainstormed with them about what I am building in gaming. I brainstormed with them about the product that I'm building on Zenit, my idea over there. So Hmm. these were asymmetric things. I never planned it out. Ki, yaar, I'll reach out to people for this aspect particularly. Ki, I want insights into one particular industry. I want insights of users. But it just Hmm. happened because I was there and I was putting in an effort to showcase my story, my work, and whatever I'm kind of achieving. Like my Twitter account is all about what's going on in my life at present. It could be Hmm. rants, it could be my work, it could be anything that I achieved recently, and I just post it out in a very informal manner on Twitter. Twitter is Hmm. completely informal. That's why I feel it has lesser friction than LinkedIn as well. सोशल मीडिया पे काफी लोग तो बस ऐसे ही कंटेंट डाल रहे होते हैं. यू नीड टू पुट इन कंटेंट दैट विल हेल्प यू एडवर्टाइज योरसेल्फ इन I फ्लो ऑफ इट. guess insights and your achievements get the eyeballs and kind of introduce to you to a wider audience, but you posting about your day and about the things that are happening in your life build a personal connect, personal bond with them. Twitter is kind of special because of the personal relationships you build. You build friends over here, not connections. So हाँ. मेरे हिसाब से it's a mix. You need to come up with the right mix. You can't be ranting all day. You can't be putting in random things all day throughout the year. Hmm. But you need to have a perfect blend. You cannot because people get bored, bro. If you just keep putting insights, you'll become a boring account. People will kind of end up muting you. I'm very lucky that I know people didn't mute me. I have the same likes coming in every tweet. Hmm. So But I that's think something special. like ये जो टॉपिक है मैं Hmm. उसको थोड़ा सा क्लोज करना चाहूंगा बिकॉज आई थिंक वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम Yes. on understanding हाँ हाँ how can you almost 1 hour. build as a Hmm. freelancer, how can you sell yourself. Yeah. Selling का अगर मैं Hmm. conclusion दूँ तो it's very important to Hmm. learn or acquire a skill which is very valid in the coming world या 2025 में बहुत valid होने वाली है. We have already talked about it in the previous thing 2024 में बात की थी. ठीक है. So second is uh, वो स्किल के ऊपर यू नीड टू ब्रांड योरसेल्फ. सपोज आई एम अ एडिटर, Okay. राइट? आई नीड टू ब्रांड माई सेल्फ एज एन एडिटर. आर्यन सिंह लोग बाद में सुनेंगे, हाँ. पहले वो सुनेंगे कि मैं एडिटर Yes. हूँ. हाँ. थर्ड इज तो यू फाइंड द राइट गाय टू वर्क, जो कि हमने लिखा है hmm. यहाँ पे, सो दैट Yes. यू बिल्ड अ प्रूफ हाँ ऑफ हाँ. ट्रस्ट एंड पॉपुलैरिटी अमंग हिज सर्कल. तो अगर आज मुझे Yeah. एक कोई एक्सवाईजी बंदा मिला होता है जिसके पास बहुत सारा कनेक्शन है, आई वुड 100 लाइक भाई मेरे से कम में काम करा, सॉरी मेरे को कम पैसा दे बट मैं काम Mm-hmm. तेरे साथ करना चाहता हूँ, आई वुड बी दैट गाय. Yes. ठीक है. हाँ. माई वन ऑफ माई वैल्यू or one of the thing that stayed constant in me for the last 5 years is I Hmm. always try to give more value than what we have got. Not that So should come with, basically, don't do bare minimum. don't Don't do do bare. bare minimum. Yes. Don't do bare Yeah. minimum so that you can build a proof of trust and popularity. Directly work with founders or people who are at a senior level, people who are at a Hmm. core level of Who have some more sort of. power. Yes. See, it's very easy to understand who those people are. हाँ. This is a hack. Hmm. People who don't need to ask others for any change in the work, any change that you propose to them to make that work better. If Hmm. that person needs to go and ask it to a higher person, then you're not working with the right person, at least the first time. I think covering everything, it's very important कि you become a value oriented guy. मेरे हिसाब से Hmm. मैंने जो conversations किए हैं लास्ट 1-2 महीनों Hmm. में about 2025, it's Yes. very highly Ah. highly important you become a outcome guy who produces a lot of good outcome. You become a guy who is ready to give a lot of value, and you become a guy who is ready to ask for anything.
ये 3 चीज़ आ गई Okay. तुम्हारे अंदर, there's nothing stopping you. हाँ, And of nice. course, हाँ, with the makes sense. distribution, chauथा. So I think that's a wrap. Make, That's a wrap for that's a wrap. And I guess we are leaving it open for the next episode as well with हाँ. uh, one line. Build a personal brand that is so personal that it is tough to replicate. Good line, good line. I guess First, we next episode will be around this itself, distribution, building the personal brand, and इसको something मतलब else as well, obviously. या That's it. Let's wrap today's session and आज का let's ho think of a topic for the next session. Drop in let's some ideas. you Even guys the can ones who drop are in. listening to this afterwards. Yes, Yeah. So anything that you guys want to listen, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो भी किया है, it's based out of our experience. जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे mm. points note किए हैं, जितने भी इसके पहले वाले episode में भी जो भी किया है, it's all based out of the 5 years of experience that Sid and I had. To be honest, I feel freelancing covers every industry, right? It's just a way to जो हमने बोला, let's not call it a freelancer, let's call ourselves working nomads. हम हाँ. वहाँ काम करते हैं जहाँ हमें मजा आता है और हमें पैसे मिलते हैं. We are not bounded to one organization. We are independent. That's our definition. That's all, guys. Thanks for joining in. I That's think all. It's already Monday. Happy Monday happy to Monday. everyone who's doing a job. We are jobless guys, so we are just going to sleep now. Yeah, that's it. We won't be sleeping. We don't need to sleep. We won't be हमारा sleeping, but 9 बजे कुछ we है won't नहीं. be answerable to anyone to work on Monday. हाँ, हमें 9 बजे कहीं नहीं पहुंचना है. So we'll work all night and then sleep at that time. So yeah. Yeah. So तो हम yeah, लोग कल that's it. सुबह I guess ending on a good note. thanks people for joining Nice in stream. मेरे channel पे. Also, if you guys like it, go ahead and watch my previous video. Follow us on Twitter, follow us on LinkedIn.